Hello guys, hope you are doing absolutely fine. So today's topic for our video is dictionaries. So same way as we discussed, we can store the data into variable, list and set. So same way there is a function of dictionaries in Python which we can use to store the information. Okay, so in this lecture, like in this video, we will learn how we can store the data into dictionaries and how we can modify that data. Okay, so in dictionaries there is a key value pair, so we can use that key value pair to store the data into dictionaries. Also, why do we need dictionaries is basically, if you are using dictionaries to store the information, so there are some specific detail level information you can store in using dictionaries. So if you think like we have a person and we want to store the age, name, location, profession, and other aspects of that person. So you can use dictionaries to store that kind of information. तो मतलब डिक्शनरीज में बेसिकली हम हर टाइप की इंफॉर्मेशन डिटेल लेवल में हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं. क्या? ओके. Working with dictionaries. Okay, so in Python there is a key value pair we use for the collection of the values. Each key is connected to a value and you can use that key to access the value associated with that key. Okay, so we will understand this using a program. So I have written down some of the program that we will go through today, and we will build our understanding based on those programs. So let's go to PyCharm. So I have created this. So in dictionary we use the curly bracket. Okay. In list we are using square bracket. In dictionaries we are using this curly bracket. So I have created this dictionary in which I have stored first name Eric, last name of that person Matthew, and age 43, and city of that person is Sitka. Okay, so in the first program which I have written down in OneNote, so let's read the statement and try to understand. तो इस प्रोग्राम की मदद से हम स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ डिक्शनरी वर्क. So let's read the statement first. So first I will erase have written in yesterday's video. So okay, let's read the statement. Use a dictionary to store information about a person you know. Okay, store the first name, last name, age, and city in which they live. You should have keys such as first name, okay, last name, age, city. Print each piece of information stored in your dictionary. Okay, so let's first, I will write down here the person. This is our dictionary. Then this curly bracket, first name, use comma for key. This is the key. Then colon, then value of that. This is key, and value is something we will write down like my name, Pardeep. Okay. So this is key and this is our value. Okay. So then first name we have stored, then give comma, last name,
Islam, then comma, age 29, and location Gurgaon. So directly store the integer without using this. Okay, then close that dictionary. Okay, so this is our dictionary. So in this, all of these, the first name is our key and this is our value. Last name is our key and this is our value. Age age is our key and 29 is the value. Okay, so if we want to fetch the value, so we can use that key to fetch that value. We can use this key. So let's go to our py-charm to understand. So in this program, what this program say, we have to print each information stored in your dictionary. Okay, so let's go to py-charm. So we have this. So let me first add the configuration of this program. Control Shift F10. So I have already created this program and I have created this file person.py and I have given this dictionary in which I have stored the first name, last name, age and city. So let's print that information. Print. First we want to print the, so we want to print these value, Eric, Matthew 43 and Sitka. Okay, so what we will do, we will use the, so if I want to print this Eric, so how I can do it? I can use that key value. So I will first write down the person and then square bracket, then first name. And if I try to hit the run button, so let's see. So see, it have printed this value. Okay, so we can use the format string, then bracket. We can use my name is first name and space second name, person, and we have to use this curly bracket in this format string to print out desired output. तो तो जब भी हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं फॉर्मेट का, तो उसके अंदर अगर अपने को कोई भी वेरिएबल पास करना है, देन वी हैव टू यूज दिस curly bracket. Okay, now first name is there, now we have to give the second name, use the same curly bracket, name of dictionary and the key value. Key value, last name, name, close the curly bracket. If we print this, let's try to first print this thing. Unmatched. Okay, one second. We have to first close this format string to print our output. So F, then double quote, and then my name is uh,
first name and then second name, last name. So if I print this, if I run this, so see, my name is Eric, so it will print this first name first and then last name. Okay. So in this print statement, you build an understanding how we can print the values using this key from this dictionary. Okay. So same way we can print the format string, double quote, my age is, then curly bracket, person or name of dictionary, then dot value. What we want to print, age. So pair bracket. So these are the syntax you have to remember. Curly bracket, curly bracket. These curly bracket is for format string, and these are so we can store the, like we can use the value in this square bracket value age. So what we want to print, age of that person. So for age of that person we are using this key age. Let's run it. Okay, dot, we, this is wrong. So there is no dot between value and the name of dictionary. Same way we can print my city is, curly bracket, name of dictionary, then square bracket, then city, key value which we want to print. So see, so we have printed information of that person here. So I hope the first simple program of dictionary you have understand. तो आपको पता चल गया होगा इसमें कि डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, क्या की होती है, क्या वैल्यू होती है, कैसे आउटपुट हम प्रिंट में कैसे यूज कर सकते हैं डिक्शनरी को, और कैसे उसकी की वैल्यू से की से उसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं. तो ये सिंपल प्रोग्राम था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. तो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक. ओके, so adding new key value pair. So if we have some simple dictionary in which we have some key values, and if we want to append one more value or many value, so we can simply add those values. So dictionaries are changeable, so you can modify them, you can add the new key value pair, you can delete also from the existing dictionary, you can delete the key value. Okay, so here it is given one example. So we have this alien underscore zero dictionary in which there is a key color and the value of that key is green. There is this another key points and value of that key is 5. If we print this, let me print it. So it will show all the key value pair. Okay. Yeah, here, and I want to print alien underscore zero. Control Shift F10 to add the configuration. So see, it printed whole dictionary which we have already defined above. Okay, and in this dictionary we want to add some key value pair. So here is the syntax to add the key value, name of key, and then equal to the value we want to store. So it will append this dictionary with this key and this value, same with the y position, this key and this value. So let me run it, let me add this.
in this. Okay, and now if I am printing alien underscore 0, so see, first it will show the original list, and the second it will add the key values in this as existing डिक्शनरी. सो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कैसे हम डिक्शनरी में कोई भी की वैल्यू न्यू पेयर ऐड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इसमें होगा कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मॉडिफाई के लिए भी इजी है. अगर मान लो इफ आई वांट टू change the value of color, so I am just writing down alien name of dictionary, then key which you want to modify. I want to modify the color from green to red, so I will write down red, and now if I print this, so see, so the color is changed to red. ठीक है, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया. सो एडिशन मॉडिफिकेशन अपने को पता चल गया. अब हम इससे कोई भी की वैल्यू पेयर को डिलीट भी कर सकते हैं. सो टू डिलीट इट, to delete any key value pair, we just write down del, delete alien, alien, then which value we want to delete. So if I want to delete the color key, so I can use that and just into there. So see, I have deleted this pair color. You see, output is now point and this. तो होपफुली आपको मॉडिफिकेशन समझ में आ गई होगी कैसे हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू की वैल्यू और कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज रिमूविंग. ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे हम रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लूपिंग थ्रू ए डिक्शनरी. ओके, so we can use the for loop to fetch the information. We have this dictionary, so I want to fetch all the item from this list one by one. I want to fetch each key, each value separated by blank line. Okay, so to add a blank line between two output, we use slash n. Okay, backslash n. And if, okay, so let's go to the program user information. So I have added this file user info. So I am just taking this user. So I have created this dictionary. These are our key and value, and I want to fetch the value. So in this dictionary there are two attributes. Okay, first username, and then this other, the value of that username. Okay, if I want to fetch both of these value, then I have to use two variable into for loop. So for the two variable you can give anything. So for key I am giving key, and for value I am giving v. Then in then name of that dictionary and dot item. So why we are using item? Item is a function which we use in dictionary to fetch the information, to fetch this pair, whole pair sequentially. So first, then colon, then we will, what we will print? Print this k and v we want to print. K, okay, first I will give first name. Name is comma, then k,
Next I will print last name is then B. So let me try to run it first. Control Shift F10. Attribute have no item. Okay. So it is not item, it is items. To fetch the, so see, first in this for loop, how it is working. First it will give for two variable in which we want to store the value in name of that dictionary and the item nothing but key value pair. So it will first fetch this value from this dictionary and then store that value username into k variable and FRME into this other variable v, and then just we are simply printing this. So first value, once the first value is printed, then our loop will go to next value, then to next value. ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अब उसमें लेकिन क्वेश्चन क्या था. ओके, सो इसमें क्या रखा है, द स्लैश एन इन फर्स्ट प्रिंट कॉल एंश्योर दैट ए ब्लैंक लाइन इज इंसर्टेड बिफोर ईच की वैल्यू पेयर. ठीक है, तो वी विल यूज दिस बैकस्लैश एन. We can use this backslash to separate this value by a line. If we use slash t, it will give a tab space between two output. Slash t is for tab space and slash n is for inserting a blank line between two output. So होपफुली आपको समझ में आ गया होगा लूप कैसे लगा सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, लूपिंग थ्रू ऑल कीज इन डिक्शनरी. तो इसमें क्या है, अगर अगर हमें सेम लिस्ट में से इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली द की वैल्यूज. ओके, इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली यूजर नेम फर्स्ट एंड लास्ट, so how we can do that. so so we can use the same for loop. Let's take this other example. So we have this dictionary in which we have this Jan, Sarah, Edward and Phil as our key and their respective favorite languages. So if we want to print only this Sarah, Edward and user information, these keys only, so we can use the for loop. For we want to print only the single key, so we have to use only single variable. So let me put the variable as a k. So you can give any name to this variable in, then name of the dictionary, favorite language, then there is this keys function you can use to fetch only the key value, then print k. Okay, so let me compile this first. So see, so all these key values are printed. So same way you can use that. And if you want to, you do not it is not mandatory to mention these keys. I just mentioned so that you can understand how this program works. But if you remove this keys function here, even if then also it will print the same keys. See, तो अपने को
कीज फंक्शन का जरूरी नहीं यूज करना है, बट इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। बाय डिफॉल्ट ये कीज ही उठाता है, बट आप स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करना चाहते हो तो उसमें वो मेंशन कर सकते हो। नाउ if you want if you want to print the values, okay, so same way I use the keys function, so you can use the other method which is values. So you can use this values method to print the values this. So if I run it, so see output, so these values are given. Okay, if you want to convert this into uppercase, so you can directly use the upper function, upper method you can use. See, it will come. And in this output you are seeing the Python is coming 2 times. Okay, and you want to remove one value, so as we know, we can use the set method to remove these duplicate values from these value. So we, in this same for loop, you can use that, use set, and if I run it, these duplicate values will be removed, only single value will be printed. If you want to store it, if you want to short it, so you can use the short method also here. Short. Okay. Okay. Let's put it only set only. तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कैसे हम की और वैल्यू को अलग अलग फैच कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम ए गिवन डिक्शनरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लूपिंग थ्रू ऑल वैल्यूज। सो ऑल वैल्यूज का मैंने बता दिया, वैल्यूज मेथड का यूज कर सकते हो आप। नाउ ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, सो if we have, so we can store any dictionary in a given list. so list के अंदर भी हम डिक्शनरीज को स्टोर करवा सकते हैं, और सेम डिक्शनरी में भी हम लिस्ट को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि इस प्रोग्राम में है, जैसे एलियन जीरो करके हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें की क्या है कलर एंड द वैल्यू इज ग्रीन, एंड सेम वे ये है, और ये एक लिस्ट है एलियंस जिसमें हम ये तीनों वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, तीनों डिक्शनरीज को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो लेट्स ट्राई फ्यू प्रोग्राम्स so that you can understand it better in better way. So let's go to our OneNote. Let me remove this. Let me erase this. तो भी आपको की वैल्यू का समझ में आ गया होगा, कैसे हम की को फैच कर सकते हैं, कैसे वैल्यू को फैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे मेथड है, सिंपल ही सिंटैक्स है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक ए dictionary containing 3 major rivers, they and the country each river run through. Okay, one key value pair might be Nile, Egypt. Okay, so we have to create a dictionary जिसमें रिवर्स हो और वो रिवर्स किस कंट्री में बहती हैं वो डिटेल हो। ये हमें समझ में आ गया। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यूज ए लूप टू प्रिंट ए sentence about each river such as the Nile runs through Egypt. Okay, so simple है, अपने को for loop लगाना है। for loop में जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को, ये की है ये वैल्यू है, दोनों को अपने को प्रिंट करवाना है
इस फॉर्मेट में. So let's go to py-charm. So I have already created that dictionary here, in which I have given this key value Nile, Egypt, Mississippi, United States, and these other values also. Okay. So in the first statement, what he want, use a for loop to print a statement about each river. ठीक है. So let me write down the for loop. For we have to fetch key and value both a and b in rivers dot items colon print. Let's take the format string, double quote, the first. What is the statement we want to print? The Nile run through Egypt. Okay, there. Now we will use the curly bracket to fetch that value from this variable. From key dot title runs to other format string, value v, then title. So let's try to run it. Second, we have to first compile this, Control Shift F10 to add the configuration. So see, all of these values are printed. So simple है. मैंने की और वी करके दो वेरिएबल बनाए, जिसमें की और वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे. आइटम्स मेथड का यूज किया टू फैच द पेयर फ्रॉम दैट लिस्ट, और उसके बाद जस्ट दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया, लूप करके सारी वैल्यूज को फैच कर लिया. तो ये सिंपल था. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. यूज ए लूप टू प्रिंट द नेम ऑफ ईच रिवर इंक्लूडेड इन डिक्शनरी. ओके, यूज ए लूप टू प्रिंट द नेम ऑफ ईच रिवर. ठीक है, इसमें अपने को सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है रिवर का. तो नेम ऑफ दैट रिवर is Nile, Mississippi, means we want to print only the key values. So let's run a for loop for key. So we only want to print the keys. So k in, then only give name of dictionary, then print only k dot item. Rivers. Okay, proper name, we have to give proper name. And also while using the for loop, make sure the indentation of our program is correct, otherwise it will show us the error. So let me run it. So see, the output is only key values are printed. Now in next, use a loop to print the name of each country. तो अगले में अपने को हमने की प्रिंट करवा दी, अब नेक्स्ट वाले में अपने को वैल्यूज प्रिंट करवानी है. तो सेम वे में फॉर वी इन रिवर्स डॉट, नाउ वी हैव टू यूज द वैल्यू मेथड, बिकॉज की बाय डिफॉल्ट होता है, कीज जो मेथड है, बट वैल्यू के केस में अगर वैल्यू को प्रिंट करा है तो आपको वैल्यूज मेथड का यूज करना ही पड़ेगा. प्रिंट नाउ v dot item. तो अभी देखो जितने भी अपनी कंट्रीज थी उनको प्रिंट करवा दिया. तो होपफुली ये भी आपको सही से समझ आ गया होगा. सो लेट्स ओके, सो if you still watching this, do follow my channel
अब हम इस पाइथन सीरीज को पूरी कंप्लीट करके ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ ही टॉपिक बचे हैं, फंक्शन हम करेंगे डिस्कस, उसके बाद फंक्शन के बाद क्लासेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फंक्शन क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट मैं फंक्शन उठा लेता हूं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, और आपको समझ में आ गया है तो आप इसकी पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा।